Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad. Welcome to Century Press and Publishers. Dear students, are you enjoying your learning? Very good. Today our letter is letter Q. Yes, it's letter Q. And it is the sound of letter Q. It's quack. Okay? Quack. Okay? What is the sound of letter Q? It's quack. अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी vocabulary की तरफ. Who is she? ये है Queen. What is this? Who is she? It's Queen. आपको पता है ना Queen का जो मलिका होती है, Queen के सर पे बहुत बड़ा सा ताज होता है और सब लोग क्वीन की बात मानते हैं. ओके, सो इट्स क्वीन. एंड व्हाट इज द इनिशियल साउंड ऑफ क्वीन? इट्स क्यू. क्वीन. एंड कीप क्वाइट, डोंट मेक अ नॉइज. सो व्हेन योर टीचर सेड quiet, quiet means you have to keep quiet. आपने शोर नहीं करना और खामोशी से बैठना है. और and what is the sound of quiet? It's Q. Quiet. Very good. What is this? It's quill. What is this? It is the feather of quill. ये quill का पर है. Okay? quill है एक बर्ड. ठीक है, एक परिंदा है जिसका नाम होता है क्विल और ये उसका पर है. ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्विल कहते हैं. एंड व्हाट इज द इनिशियल साउंड ऑफ क्विल? इट्स क्यू. क्यू क्विल. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सो कंफर्टेबल. जब हमने सोना होता है हम इसको इस्तेमाल करते हैं. दिस इज quilt. Yes, इसको हम कहते हैं quilt. What is the initial sound of quilt? It's Q. Quilt. Very good. Now let's move towards our writing. But learn all the words. आपने इन तमाम words को याद करना है. अब हम writing practice की तरफ चलते हैं. तो writing के लिए आपने सबसे पहले make a circle, okay, and then a slanting line in the center of the circle. It's capital letter Q. Okay बच्चों, make a circle and a slanting line. It's capital letter Q. And for small letter Q, you have to write in the center lines of your copy. Make a circle, go up and go down. Okay, it's small letter Q. Dear students, आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है. एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वर्ड्स दैट स्टार्ट फ्रॉम लेटर Q. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.